Hello everyone, welcome to the Needle Magic. By seeing the thumbnail, you know that today's tutorial is about the beautiful granny square dress. तो thumbnail देखने से आपको पता है कि आज के tutorial में हम ये प्यारा सा granny square dress बनाने वाले हैं. For the dress, we need a total of 8 granny squares. हमें 8 granny squares चाहिए. And the measurement of the dress is according to the measurement of the chest. You can measure the chest and then you can divide it by 4, and whatever you get the measurement, your granny square should be of that measurement. So this is how you can make a bigger और स्मॉलर ड्रेस. तो जैसे आप अपनी चेस्ट मेजर करेंगे, जिसके लिए भी आप बना रहे हैं आप उसकी चेस्ट मेजर करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो मेजरमेंट आपको मिलेगा आपका ग्रैनी स्क्वायर उस मेजरमेंट का होना चाहिए. तो इस तरीके से आप अपनी ड्रेस को बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं. तो इस तरीके के हमारे को 8 ग्रैनी स्क्वायर्स चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग द ग्रैनी स्क्वायर. सो फर्स्ट वी विल मेक अ मैजिक सर्कल. तो सबसे पहले हम मैजिक सर्कल बनाएंगे. So chain 1 to secure the magic circle. Now chain 3, 1, 2, 3, and this will be counted as our first double crochet stitch. ये हमारा पहला double crochet stitch की तरह count करेगा. Make 2 more double crochet stitches in the magic circle. 2 और double crochet stitches बनाएंगे हम magic circle के अंदर. Now we have a cluster of 3 double crochet stitches. हमारे पास ये क्लस्टर है 3 डबल क्रोशे स्टिचेस का. चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे. मेक 3 डबल क्रोशे स्टिचेस इन द मैजिक सर्कल. तो 3 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे मैजिक सर्कल के अंदर. 1, 2 एंड 3. चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे. मेक 3 मोर डबल क्रोशे स्टिचेस इन द मैजिक सर्कल. 3 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे मैजिक सर्कल के अंदर. 2 and 3. Then chain 2 again. फिर से chain 2 करेंगे. Make 3 more double crochet stitches in the magic circle. 3 और double crochet stitches बनाएंगे magic circle के अंदर. So we must have a total of 4 clusters of 3 double crochet stitches. हमारे पास 3 double crochet stitches के 4 clusters होने चाहिए. Like you can see 1, 2, 3 and 4. Now chain 2, दोबारा से chain 2 करेंगे and slip stitch onto the third chain. So at the beginning we had made 3 chains, so we'll go on top of the 3 chains and we'll make a slip stitch and join. Then slip stitch onto the next stitch. Next stitch में slip stitch करेंगे. Slip stitch onto the next stitch. Next stitch में slip stitch करेंगे. And finally slip stitch in the chain 2 space. Chain 2 space में slip stitch करेंगे. And your round 1 is done. Now we have to just pull on the tail and tighten the magic circle. तो हमने ये tail pull करेंगे और हमारा ये magic circle हम close कर देंगे. Now let's begin with the round 2. Round 2 start करते हैं. And if you know how to make the granny square, you can just forward the video and go on to the part where I teach how to join the granny squares, so that you won't waste your time. But if you are a beginner and you do not know how to make a granny square, then you can watch the video and learn how to do the same. So अब chain 3 करेंगे. We'll chain 3 and this is our first double crochet stitch. We'll make 2 more double crochet stitches in the chain 2 space. इसी space में 2 और double crochet stitches बनाएंगे. Then chain 2, 1, 2 and make 3 more double crochet stitches in the same chain 2 space. इसी same chain 2 space में हम 3 और double crochet stitches बनाएंगे और ये होगा हमारा corner. और हर corner को हमने इसी तरीके से बनाना है. 3 डबल क्रोशे स्टिचेस होंगी, चेन 2 एंड 3 डबल क्रोशे स्टिचेस. हर कॉर्नर हमारा ऐसा होगा. नाउ चेन 1, एक चेन बनाएंगे एंड नाउ वील स्किप दीज 3 डबल क्रोशे स्टिचेस हियर. वील गो ऑन टू द नेक्स्ट चेन 2 स्पेस. नेक्स्ट चेन 2 स्पेस में जाएंगे और इसी तरीके से कॉर्नर बनाएंगे. सो वील वर्क अ कॉर्नर हियर इन द नेक्स्ट चेन 2 स्पेस बाय वर्किंग 3 डबल क्रोशे स्टिचेस. 1, 2, 3, then chain 2, 2 chains बनाएंगे and 3 more double crochet stitches in the same chain 2 space. उसी same chain 2 space में 3 और double crochet stitches बनाएंगे. Then chain 1 बनाएंगे. Then we'll go on to the next chain 2 space and we'll work
द सेम लाइक वी डिड हियर, उसी तरीके से जैसे हमने कॉर्नर बनाया था यहाँ पे भी बनाएंगे 3 डबल क्रोशा स्टिचेस, 3 डबल क्रोशा स्टिचेस बनाएंगे, chain 2 and 3 more double crochet stitches in the same space, उसी सेम स्पेस में 3 और डबल क्रोशा स्टिचेस बनाएंगे. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर थर्ड कॉर्नर. हमने तीसरा कॉर्नर भी बना लिया है. चेन 1, एक चेन बनाएंगे एंड दिस इज आवर लास्ट कॉर्नर. तो लास्ट कॉर्नर भी बनाएंगे हम इसी तरीके से 3 डबल क्रोशा स्टिचेस, 1 2 3, चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे एंड 3 मोर डबल क्रोशा स्टिचेस इन द सेम स्पेस, उसी सेम स्पेस में 3 और डबल क्रोशा स्टिचेस बनाएंगे. देन चेन 1 एंड नाउ विल स्लिप स्टिच ऑन टू द थर्ड चेन. तो जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन्स बनाई थी, हम टॉप वाली चेन में जाके स्लिप स्टिच कर लेंगे. स्लिप स्टिच ऑन टू द थर्ड चेन, slip stitch on to the next stitch पे भी slip stitch करेंगे, slip stitch on to the next stitch पे slip stitch करेंगे and finally slip stitch in the chain 2 space. तो chain 2 space में slip stitch करेंगे and every time when you finish the round you have to slip stitch on through the stitches and reach the chain 2 space and you have to start your next round from the chain 2 space. तो हमेशा आपने अपना next round जो है chain 2 space से start करना है. So now let's begin with the round 3. So for round 3, now we'll make the corner first. सबसे पहले corner बनाएंगे chain 3. This is our first double crochet stitch. ये हमारा पहला double crochet stitch की तरह है. Make 2 more double crochet stitches in the same chain 2 space. 2 और double crochet stitches हमने बनाई, तो हमारे पास अब total 3 हो गई. Now chain 2, 2 चेन्स बनाएंगे एंड 3 मोर डबल क्रोशा स्टिचेस इन द सेम चेन 2 स्पेस. तो इसी सेम चेन 2 स्पेस में हम 3 और डबल क्रोशा स्टिचेस बनाएंगे. देन चेन 1 एंड नाउ इन द चेन 1 स्पेस वील वर्क 3 डबल क्रोशा स्टिचेस. तो ये जो चेन 1 स्पेस है इसमें हम 3 डबल क्रोशा स्टिचेस बनाएंगे, 2 3. देन चेन 1 एंड नाउ वी हैव रीच्ड द कॉर्नर. So we'll work the corner the way we have worked earlier. तो जैसे हमने पहले अपना कॉर्नर वर्क किया था उसी तरीके से वर्क करेंगे. 3 डबल क्रोशा स्टिचेस, चेन 2, 3 डबल क्रोशा स्टिचेस उसी एक चेन 2 स्पेस में. तो हर कॉर्नर इसी तरीके से वर्क करना है आपने. देन चेन 1 एंड इन द चेन 1 स्पेस वर्क 3 डबल क्रोशा स्टिचेस. तो चेन 1 स्पेस में हम 3 डबल क्रोशा स्टिचेस वर्क करेंगे. चेन 1 अगेन एंड नाउ वी हैव रीच्ड आवर थर्ड कॉर्नर. तीसरे कॉर्नर पे पहुंच गए हम. तो हम अपना कॉर्नर 3 डबल क्रोशा स्टिचेस, चेन 2 एंड 3 डबल क्रोशा स्टिचेस वर्क करेंगे यहाँ पे. चेन 2, 3 डबल क्रोशा स्टिचेस उसी सेम जगह पे. सो वी हैव टू वर्क द कॉर्नर सेम वे एवरी टाइम. Chain 1. Now in the chain 1 space we'll work 3 double crochet stitches, 3 double crochet stitches in the chain 1 space, chain 1 again and now we have reached our last corner. देखिए हम last corner पे पहुंच गए. Now we'll work 3 double crochet stitches, chain 2, 3 double crochet stitches in the same chain 2 space, chain 2 and 3 double crochet stitches, 1 2 and 3, chain 1. Now chain 1 space we have to work 3 double crochet stitches, 1 2 and 3, chain 1 again and now we have to slip stitch on to the third chain. So जो starting में हमने 3 chains बनाई थी, we made 3 chains at the beginning, so we'll go on top of the third chain and do a slip stitch onto the next stitch, slip stitch onto the next stitch and slip stitch in the chain 2 space from where we'll start our next round. So इसी तरीके से आपने अपना ग्रैनी स्क्वायर इसी पैटर्न से आपने कंटिन्यू करना है. उतना बड़ा बनाना है
जिस हिसाब से आपको अपनी मेजरमेंट आपने ली है उस मेजरमेंट के हिसाब से आपने अपना ग्रैनी स्क्वायर बनाना है. सो अकॉर्डिंग टू योर मेजरमेंट यू कैन increase or decrease the size of your granny square. I'll show you one more round and then you have to continue with the granny square with the same pattern unless and until you get your desired size. तो मैं एक और राउंड आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है एंड आफ्टर दैट आप अपना उसी पैटर्न के साथ अपना ग्रैनी स्क्वायर इतना बड़ा बना सकते हैं जितना आपकी मेजरमेंट से आपको मेजरमेंट जो मिली है उस हिसाब से. सो चेन 3 हमेशा स्टार्टिंग में चेन 3 करना है एंड 2 डबल क्रोशे स्टिचेस. सो द चेन 3 विल काउंट एज आवर फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिचेस, आई मीन फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच एट द बिगिनिंग. चेन 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. तो इसी सेम स्पेस में 3 और डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे. तो हमेशा हमारा कॉर्नर जो बिगिनिंग वाला होगा वो चेन 3 के साथ स्टार्ट होगा. बाकी सारे जो कॉर्नर्स होंगे उसमें हम 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, चेन 2 3 डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे. देन चेन 1 एंड नाउ वी हैव 2 चेन 1 स्पेसेस हियर. पहले हमारे पास एक चेन 1 स्पेस थी, फिर हमारे पास 2 हैं, फिर इसी तरीके से बढ़ती जाएंगी. अब इस चेन 1 स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे. सो वील वर्क 3 डबल क्रोशे स्टिचेस इन द chain 1 space, then chain 1 again. Now in the next chain 1 space again we'll work 3 double crochet stitches, then chain 1 and now we have reached our corner. So we'll work 3 double crochet stitches. corner में 3 double crochet stitches करेंगे हम यहाँ पे. chain 2 2 chains बनाएंगे and 3 more double crochet stitches in the same space. तो 3 और double crochet stitches बनाएंगे इसी same space में. then chain 1 in the chain 1 space 3 double crochet stitches. तो chain 1 space जो है next उसमें 3 double crochet stitches बनाएंगे. then chain 1 3 double crochet stitches in the next chain 1 space. 1 2 3 chain 1. now corner 3 double crochet stitches, chain 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. chain 1 3 double crochet stitches in the next chain 1 space. next chain 1 space में 3 double crochet stitches बनाएंगे. then chain 1 3 double crochet stitches in the next chain 1 space. next chain 1 space में 3 double crochet stitches बनाएंगे. chain 1 and now we have reached our corner. फिर से हम corner पे पहुंच गए हैं. so we'll work 3 double crochet stitches, chain 2 3 more double crochet stitches in the same space. उसी same space में 3 और double crochet stitches बनाएंगे. then chain 1. now in the next chain 1 space work 3 double crochet stitches, 1 2 3 chain 1 3 double crochet stitches in the next chain 1 space. next chain 1 space में 3 double crochet stitches बनाएंगे. chain 1 and now slip stitch onto the third chain. तो जो स्टार्टिंग में हमने बनाई थी 3 चेन्स उसकी थर्ड चेन पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे. तो स्लिप स्टिच onto the third chain, slip stitch onto the next stitch, slip stitch onto the next stitch and finally slip stitch in the chain 2 space. तो इसी तरीके से आपका ये वाला राउंड भी कंप्लीट होता है. इसी पैटर्न के साथ आप अपना ग्रैनी स्क्वायर बड़ा छोटा बना सकते हैं. So just repeat the pattern and make your granny square and you must have a total of 8 granny squares. तो जैसे मैंने 8 बना के रखे हैं यहाँ पे. अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे join कैसे करना है. So finish making 8 granny squares and meet me back here and I'll show you how to join the granny squares and complete the beautiful dress. So like this you have to have 8 squares, 8 granny squares. इस तरीके से आपके पास 8 granny squares होने चाहिए. So after you complete your 8 granny squares,
now I'll show you how to join them to make the dress. तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको join कैसे करना है. So firstly we'll take 3 squares, 1, 2 and 3, and you have to place them like this. So just place one corner to the other corner like this, and then place the third square in this way. So we have 3 squares. तो ये देखिए आपने इस तरीके से स्क्वायर्स को रखना है. 2 कॉर्नर्स को पहले यहाँ एक दूसरे के साथ रख के, ये तीसरा वाला हम स्क्वायर बीच में से रखेंगे. एंड नाउ यू हैव टू जॉइन फ्रॉम दिस एंड लाइक दिस टू दिस एंड. तो इस तरीके से हमें इसे जॉइन करना है. सो यू कैन यूज़ एनी मेथड. यू कैन यूज़ अ टेपेस्ट्री नीडल, यू कैन डू इट विद अ स्लिप स्टिच. इट्स टोटली अप टू यू. तो आपको जैसे इसको जॉइन करना आप वैसे कर सकते हैं. टेपेस्ट्री नीडल की मदद से कर सकते हैं, सुई धागे की मदद से कर सकते हैं, या स्लिप स्टिच की मदद से कर सकते हैं क्रोशे नीडल के साथ. टोटली आपके ऊपर है. तो मैं इसे कैसे जॉइन कर रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ. फिर आपने यहाँ से लेके इसे यहाँ तक जॉइन करना है. देखिए सबसे पहले मैं इसे उल्टा कर दूँगी ताकि जो मैं जॉइन कर रही हूँ वो अंदर वाली तरफ आए. तो जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर रखेंगे. दोनों स्क्वायर्स की जो रॉन्ग साइड है वो बाहर की तरफ रहेगी और राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी. सो वी हैव टू ऑलवेज कीप द रॉन्ग साइड अप एंड राइट साइड इन व्हेन एवर वी आर joining the squares, so that it has a cleaner look outside. So now I'll make a slip knot first so that I can join it to the square. Now I'll start joining from here. So I'm going into the chain 2 space of the first square and then of the chain 2 into the chain 2 space of the second square. तो मैंने दोनों squares के chain 2 space में अपनी needle डाली है. Now I'll just attach the yarn. Sorry. And I'll chain 1 to secure. And now I'll start joining. Just leave the yarn tails. We can weave in at the end. तो जो yarn tails है ये बाद में भी weave in कर सकते हैं, नहीं तो इनके 2-3 knots बांध के भी अगर आप कट कर देंगे तो भी ये secure रहेगा. Now I'll go into the back loop of the first stitch here and the front loop of the stitch of the second square, and I'll do a slip stitch. Then again back loop of the first square, front loop of the second square, and do a slip stitch. Then again back loop of the first square, front loop of the second square, and do a slip stitch. तो इसी तरीके से आप इसे पूरा जॉइन करेंगे यहाँ तक. एंड देन ये सेकेंड वाला स्क्वायर भी जॉइन करना है. जिस तरीके से मैंने रख के आपको दिखाया था उसी तरीके से रख के जॉइन करना है. अगर आपको ऐसे मुश्किल होता है तो आप स्टार्टिंग में वो कोई भी यार्न से उसके अटैच कर सकते हैं या स्टिच मार्कर लगा सकते हैं, तो आपके लिए ईजी होगा. So you can even add a stitch marker at the beginning when you place the square so that it's easier for you to understand how you have to join them. तो ये देखिए इस तरीके से. अब मैं यहाँ तक इसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि सेकेंड वाला स्क्वायर कैसे जॉइन करेंगे. So I'll complete it till here and then I'll show you how to attach the next square to this. I have attached these 2 squares. As you can see, this is the wrong side and this will be the this will be the front side, and you can see it's neat. So this is what I was saying, that you have to, my god, this is shaking so much. So you have to always join the squares keeping the wrong side on top. तो हमेशा अपना रॉन्ग साइड आप ऊपर की तरफ रखेंगे, दोनों स्क्वायर्स के बाहर की तरफ रखेंगे रॉन्ग साइड, और राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे, तो आपका जो वर्क है वो हमेशा नीट रहेगा. नाउ ओनली द थिंग आई वांटेड टू शेयर विथ यू इज लास्ट join, we'll go into the chain 2 space of both the squares and then do a slip stitch. So we have attached these 2 squares, as you can see. Now we have to attach these 2 squares. So when you place like this, you can see these 3 squares placed like this. We have
joined till here. Now we have to join these two squares. So what we'll do is, I'll take out my needle first. We will place this square on top of this square like this, and then we can join from here to here. तो अब हम यहाँ से यहाँ तक इसे ज्वाइन कर देंगे. अब दोनों जो रॉन्ग साइड्स है वो ऊपर की तरफ है और राइट साइड अंदर की तरफ है. तो अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसे ज्वाइन कर देंगे. तो ये वाला एक पीस हमारा रेडी हो जाएगा. सो आई विल ज्वाइन फ्रॉम हियर टू हियर, and then this is how we have to join the other piece as well. So the next 3 squares also we have to join the same way, similar way, because this will be the front and the other 3 squares will be the back side. So we have to make the same pattern for front and back. So like we join these 3 squares, we'll join it like this. तो ये जिस तरीके से हम ये 3 स्क्वायर्स को हमने ज्वाइन किया है, इसी तरीके से 3 और स्क्वायर्स लेके इसी पैटर्न में हमने उन्हें ज्वाइन करना है. सो आई विल कंप्लीट ज्वाइनिंग दीज 2 स्क्वायर्स and I'll join the other 3 squares in the same pattern, and then I'll meet you and then I'll share with you how to do the further steps and how to join the other 2 squares. So I have attached these 2 squares as well. मैंने ये दोनों squares भी join कर लिए हैं, and now I'll chain 1 and fasten off. तो मैं chain 1 करके fasten off कर रही हूँ. yarn को हम cut कर लेंगे, tighten it, and I'll show you. This is how it looks now after joining the 3 squares. This is what we have. So this is the neck portion and this is the front portion. ये neck portion है और ये front portion है. ये देखिए अभी फ़िलहाल ये तीनों squares join होने के बाद इस तरीके से दिख रहे हैं, और 3 और squares को हमने इसी pattern में join करना है. So we have to take 3 more squares and join it in the same pattern, which will be our back. So we'll take the 3 squares. And we will join it in the same pattern, in the same way like we did the front portion. We'll join from here to here, but make sure you put the right sides in and wrong side on top. तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जब भी हम join करेंगे, तो हम wrong sides को बाहर की तरफ रखेंगे और right side को अंदर की तरफ. तो अगर इस पोजिशन में रख के आप कंफ्यूज हो रहे हैं जब आप फोल्ड कर देते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट पुट अ स्टिच मार्कर हियर, हियर, one here and here. So when you add the stitch marker, so if you fold it also, when you open it, you know that you're not confused, you know, because when you're a beginner you get confused that how to join it when you place one on top of the other, and then when you open you kind of get confused. तो कभी कभी confuse हो जाते हैं हम लोग. तो क्या कर सकते हो आप, या तो एक यार्न का पीस लेके आप टाई कर सकते हो कॉर्नर्स पे, यहाँ पे और इधर और इधर. तो आपको पता है कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक. सो आई विल जॉइन दीज 3 स्क्वायर्स टुगेदर एंड देन आई विल शो यू व्हाट टू डू विद द 2 स्क्वायर्स दैट आर लेफ्ट. तो जो 2 स्क्वायर्स बचे हुए हैं हमारे वो कहाँ लगाने हैं वो मैं आपको बताऊँगी ये वाले ज्वाइन करने के बाद. सो आई हैव कंप्लीटेड मेकिंग द फ्रंट एंड बैक पार्ट. मैंने फ्रंट और बैक पार्ट बना लिया है ये 3 ग्रैनी स्क्वायर्स को ज्वाइन करके. सो दिस इज़ वन पार्ट एंड दिस इज़ अनदर पार्ट एंड इट्स एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल सेम है ये. सो यू कैन सी बोथ द पीसेस आर एग्जैक्टली द सेम. वी हैव मेड इट यूजिंग 3 ग्रैनी स्क्वायर्स. 3 ग्रैनी स्क्वायर्स को यूज़ करके हमने फ्रंट एंड बैक पीस बना दिया है. नाउ वी हैव टू अटैच द रेस्ट 2 स्क्वायर्स दैट आर लेफ्ट. जो 2 स्क्वायर्स हमारे बच गए हैं उसे लगाना है हमने, उसे अटैच करना है. सो फर्स्टली take one piece of the 3 granny squares, whether the front or the back, you can take any piece, and take one square and join it here. See, 1 2 3, join it to the first piece from here to here. So we'll attach this square first. So I'll attach this square to this square and then I'll show you where to attach the last square. तो पहले मैं इसको अटैच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि लास्ट वाला स्क्वायर हमने कहाँ अटैच करना है. सो अगर आप इस तरीके से देखेंगे कि ये फर्स्ट स्क्वायर है, ये सेकंड स्क्वायर है, ये थर्ड स्क्वायर है, तो हमें फर्स्ट स्क्वायर से इसे अटैच करना है. ओके, सो वील अटैच इट
from here to here, and always place wrong sides on top and then attach it. So हमेशा wrong sides को ऊपर रख के हम इसे attach कर लेंगे. So I'll attach these two squares and then meet you back here. So I have attached the square to square number 1, and at the last I have made a slip stitch in the chain 2 spaces of both the squares. Last में मैंने chain 2 space दोनों squares की मैं slip stitch कर दिया है, and chain 1 करके अब मैं fasten off करूँगी. So I'll chain 1 and fasten off. So this is how it looks so far. ये देखिए अभी इस तरीके से दिख रहा है. पहले ये ऐसे था, अब हमने एक और स्क्वायर यहाँ पे इसको ऐड कर लिया है. So this is how it looks now. First we had 3 squares. Now we have one more square attached to the first square. Now, as I told you, this is square number 1, this is 2, and this is 3. So now on the first square we added 1 square. Now on to the third square we have to add our last square. तो जो हमारा last square बचा हुआ है उसे हम third square के साथ attach कर लेंगे. So we'll attach this square to the third square. From here to here we'll attach it like this. So I'll join it and then I'll show you how it looks. I'm sorry, not here. We have to attach the square here, this way. तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि हमने ऊपर नहीं अटैच करना, ये 2 पोर्शन छोड़ के ये वाले पोर्शन पे अटैच करना. सो वी हैव टू लीव these 2 parts and we have to attach the square here at the bottom here. Okay, so we will attach it from here to here. I'll show you once again. We have to leave these 2 sides open. We don't have to attach any square on these 2 sides. We will attach the last square here at the bottom on this side of the square. I hope it's clear. ध्यान से देख लीजिए कि हमने ये ऊपर की 2 साइड्स छोड़ देनी है और ये नीचे वाले साइड पे ये वाला स्क्वायर अटैच करना है. जैसे हमने देखिए यहाँ पे भी नीचे वाले पोर्शन पे अटैच किया है, ऊपर वाले 2 साइड्स को छोड़ के हमने नीचे वाले पोर्शन पे अटैच किया है स्क्वायर के. उसी तरीके से यहाँ पे भी हम ये वाले 2 साइड्स छोड़ के वी विल लीव दीज 2 साइड्स एंड वी विल अटैच द स्क्वायर हियर. So I'll attach the square here and then I'll show you how this looks. So I have attached the last square as well. मैंने last square भी attach कर लिया है. ये देखिए, तो अभी फ़िलहाल ये इस तरीके से दिख रहा है. ये देखिए, पहले ये 3 स्क्वायर्स थे हमारे पास, फिर हमने एक स्क्वायर फर्स्ट वाले स्क्वायर पे अटैच किया और एक स्क्वायर थर्ड वाले स्क्वायर पे. So first we had 3 squares, 1, 2, 3. We attach 1 square to the first square and 1 square to the third square. So this is what we have now. Now what we have to do is, this is the back side and this is the front side. So we'll keep the front side as it is. Okay. Now we have the, if you think this as the front portion of the dress, then we have the back portion of the dress here, in which we have these 3 squares. So we'll place it on top here like this way. Okay, इस तरीके से इसे प्लेस कर देंगे. रॉन्ग साइड्स हमारे बाहर की तरफ रहेंगे और राइट साइड्स अंदर की तरफ रहेंगे. सो आवर राइट साइड्स आर इनसाइड, रॉन्ग साइड इज अप. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, the square we attach to the back part or the front part, we'll fold it, we'll fold it like this way. Okay, so that we have a triangle. So we'll fold it this way and we'll attach this part to this part. Okay, this is the way you have to attach. So I'll show you once again. तो ये देखिए, ये हमने ये वाला पोर्शन रखा है यहाँ पे, ये जो फ्रंट पोर्शन या बैक पोर्शन, एक पोर्शन हमारा रेडी हो चुका है. जो दूसरा पोर्शन है 3 स्क्वायर्स का, हमने उसको ऊपर रखा है. वी हैव प्लेस द 3 स्क्वायर्स ऑन टॉप. ओके, एंड नाउ वील फोल्ड इट फ्रॉम हियर लाइक दिस सो दैट वी हैव अ ट्रायंगल, and we'll attach this portion
of the square to this square like this. Okay, and same way we have to do on the other side. See, we have this square here, we'll fold it this way and we'll attach it. So basically, like we did earlier, we are attaching one part of the square to the first square and one part of the square to the third square, if we count this as 1, 2 and 3. So this is what we are doing. So we will be left with this, and then we have to work on the bottom so that we work the bottom part of the dress. तो फिर हमें bottom part dress का work करना होगा. So now I'll join these two parts and then I'll show you how it looks. I have completed one round. मैंने एक round complete कर दिया है और देखिए मैं starting में जो हमने chain 3 बना के start किया था वहाँ तक पहुँच गई हूँ. I've reached the starting of the round. Now you have to just slip stitch onto the third chain that we made at the beginning. जो हमने chain 3 starting में बनाया था उस पे slip stitch कर देंगे. Slip stitch onto the next stitch पे slip stitch करेंगे. Slip stitch onto the next stitch पे slip stitch करेंगे. Slip stitch into the chain 2 space में slip stitch करेंगे. And this is how we have to end every round, and we have to begin the round from the chain 2 space. तो सारा जो भी round हम start करेंगे वो chain 2 space से start करेंगे. And this round what we are going to do, you have to repeat this as many times as you want. It depends on how long you want your dress to be. तो जितनी लंबी आपको आपकी ड्रेस चाहिए, आपको ये वाला राउंड जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ इसको रिपीट करते जाना है. सेम पैटर्न आप रिपीट करते जाएंगे तब तक जब तक आपकी ड्रेस की लेंथ नहीं वहाँ तक पहुँचती जहाँ तक आपको चाहिए. सो जस्ट कीप रिपीटिंग दिस राउंड पर्टिकुलरली until you reach your desired length. So chain 3 at the beginning, chain 3 करना है. Then 2 double crochet stitches in the chain 2 space. 2 double crochet stitches करेंगे chain 2 space में. Chain 2 and 3 more double crochet stitches in the same chain 2 space. तो उसी same space में हम 3 और double crochet stitches कर रहे हैं. Then chain 1, and in these chain 1 spaces we have to do 3 double crochet stitches. तो हर एक chain 1 space में हमने 3 double crochet stitches करते जाना है. 1, 2, 3. Chain 1, 3 double crochet stitches in the next chain 1 space. 1, 2 and 3. Chain 1, 3 double crochet stitches in the next chain 1 space. 1, 2, 3. Chain 1, 3 double crochet stitches in the next chain 1 space. 1, 2, 3. Chain 1, and you have to keep repeating this until you reach this portion. Because this portion you have to be careful, because we will do a 3 double crochet stitch cluster here, and then we'll skip this chain 1 space and we'll go on to the next chain 1 space here and make a cluster here. तो ये जो बीच में जो ये आएगा चेन स्पेस इसको हम स्किप कर देंगे. यहाँ पे हम अब की बार से चेन 1 नहीं करेंगे. So we are not going to do a chain 1 now here when we reach here. So I'll complete till here and then I'll show you what to do on this portion. So here we will do a chain 3, the 3 double crochet stitches cluster. तो यहाँ पे हम 3 double crochet stitches का cluster करेंगे. 1, 2 and 3. Chain 1. I'm so sorry, here we don't need to do the chain 1. यहाँ पे हमको chain 1 नहीं करना है. ये देख लीजिए ये वाले पोर्शन में, ये देखिए जहाँ यहाँ से हमने ये वाला स्किप किया था और हमने ये वाले दोनों में 3 डबल क्रोशे स्टिचेस किए थे. वी हैव टू be very careful while doing this. Now here we don't need to chain 1, we will directly go on to
the next square. So we will skip this space here and we'll go on to the next space here and we'll do a 3 double crochet stitches cluster without the chain 1 in the middle. तो यहाँ पे हमने chain 1 नहीं करना, डायरेक्टली हम ये वाला स्किप करके यहाँ जाएंगे. 1 2 3. Now we'll make a chain 1 and we'll continue working, and whenever you come to this portion of the round, you will work till here, and then here we don't have a chain 1, so we will skip this space and we'll go on to the next chain 1 and start working from there. So here we'll have a contraction and then here it will start growing. I hope you are understanding. So now on to the next chain 1 space, 3 double crochet stitches, 1 2 3, chain 1 1 2 3, chain 1, and repeat the same until you reach here, and then you have to do 3 double crochet stitches, chain 2 and 3 double crochet stitches here. Then you have to go down working 3 double crochet stitches in the chain 1 space, and then again you'll have to skip the one which is in the middle and work till here, and then start from here. You have to skip the one in the middle and without a chain 1 you have to work here. तो chain 1 के बिना यहाँ पे वर्क करना है आपने, और इसी तरीके से आपने ये राउंड कंप्लीट करना है, और इसी राउंड को आप तब तक कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक आपकी ड्रेस उतनी लेंथ में नहीं पहुँचती जितनी आपको चाहिए. सो आई रीच टिल हियर एंड देन आई शो यू. सो हियर आई हैव रीच द कॉर्नर. मैं कॉर्नर पे पहुँच गई हूँ, एंड हियर आई बी डूइंग 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, chain 2 and 3 double crochet stitches in the same space. 3 chain 2, 2 chains बनाएंगे, and 3 double crochet stitches in the same space. उसी same space में 3 और double crochet stitches बनाएंगे. Chain 1. Now we'll repeat doing 3 double crochet stitches in the chain 1 space. 1 2 3, chain 1 into the next chain 1 space, 1 2 3, chain 1, and you have to continue this way. So here I've again reached the portion where I'll work in this from this square to directly to the other square, other side. तो मैं इस वाले पोर्शन में पहुंच गई हूँ. ये देखिए, ये बीच का जो पोर्शन होगा, अगर आप ऐसे इसको रखेंगे सीधा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बीच का पोर्शन है यहाँ पे हम वर्क नहीं करेंगे, हम यहाँ से सीधा ये वाले पोर्शन से सीधा यहाँ जाएंगे. सो chain 1, 3 double crochet stitches in the chain 1 space here, 1 2 3. Now we are not going to do a chain 1. यहाँ पे chain 1 नहीं करेंगे. We'll skip this center portion and we'll go on to the other side here, and we'll work 3 double crochet stitches. 1 2 and 3. So this is how it looks. Chain 1 and work normally until you reach your corner. 1 2 3, chain 1 1 2 3, chain 1, and continue. So here I have reached the corner again. मैं corner पे पहुंच गई हूँ, and I'll be doing 3 double crochet stitches, chain 2, 3 double crochet stitches in the same space. इसी same space में 3 double crochet stitches करेंगे. Chain 2, 1 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. 2 and 3, then chain 1 and continue
until you reach the bottom portion here, and then you have to do the same thing. आपको यहाँ पे सेम चीज़ करनी है. ये वाला पोर्शन स्किप करेंगे सेंटर वाला, और यहाँ से सीधा इधर स्किप कर, मतलब यहाँ से सीधा यहाँ जंप करेंगे बिना कोई चेन वन के in the middle. We don't have to do a chain one here in the middle. From here we'll directly make 3 double crochet stitches here, and then we'll continue making 3 double crochet stitches in the chain one space. Then here we have to make 3 double crochet stitches, chain 2, 3 double crochet stitches in this space. Then we'll continue making 3 double crochet stitches in the chain one space again here, and then again when you reach this portion you have to skip the middle part, and from here you have to directly jump to here, and you have to continue doing this round this way, and then here you have to slip stitch to the chain 3. So this is how you have to complete this round, and you have to repeat this round as many times as you want your dress to be. It depends on how long you want your dress to be, so that many times you have to repeat until you get the desired length. तो आपको ये वाला जो राउंड है, ये वाला राउंड इसी पैटर्न को आपने तब तक रिपीट करते जाना है जितनी लॉन्ग आपको ड्रेस चाहिए तब तक, और फिर उसके बाद इसके हम स्ट्रैप्स बनाएंगे और हमारी ड्रेस हो जाएगी रेडी. तो मैं इसे उतना लॉन्ग बनाती हूँ जितना मुझे चाहिए, और फिर इसके हम स्ट्रैप्स बनाएंगे. सो आई विल कंप्लीट मेकिंग this dress as long as I want, and then I'll show you how I make the straps of this dress. So meet you back here after making the length of the dress. तो ये लेंथ इसकी जितनी लॉन्ग मुझे चाहिए उतनी बनाने के बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है, एंड फिर इसके हम बनाएंगे straps. So then we'll make the straps. So meet you back here after some time. I have joined all the squares now. ये देखिए मैंने सारे squares join कर लिए, and this is how it looks. इस तरीके से कुछ दिखता है. ये देखिए, ये देखिए. अब ये जो है ये टॉप पोर्शन है और ये बॉटम पोर्शन अब हमने बनाना है यहाँ पे. सो दिस इज़ द टॉप पोर्शन नाउ वेयर वी नीड टू ऐड द स्ट्रैप्स एट द एंड. यहाँ पे स्ट्रैप्स आ जाएंगे, एंड दिस इज़ द नेक पोर्शन, एंड फ्रॉम हियर द आर्म्स विल कम आउट. यहाँ से आर्म्स आपकी बाहर आ सकती है. ये नेक है, यहाँ से हाथ आएंगे, एंड ये जो है ये चेस्ट पे आएगा ये पोर्शन, और अब हम बॉटम वाला पोर्शन बनाने वाले हैं. सो नाउ आई फ्लिप इट इनसाइड आउट, मतलब आई जस्ट पुट द राइट साइड आउट नाउ. मैं राइट साइड को बाहर निकाल लूँगी, एंड वील स्टार्ट मेकिंग द बॉटम पोर्शन. सो सी, दिस इज द राइट साइड, and now we have to attach the yarn and start making the bottom portion. So I'm flipping it this way so that it's easier for you to see in the camera. Now we'll just make a slip knot and add it to any of the corners. So this is the corner here, then you can see here this is the corner, and here we have a corner here. So you can add the yarn to any of these corners. I'm going to add it in the center. तो आप कोई भी कॉर्नर में इसे ऐड कर सकते हैं यार्न को, और वहाँ से आप अपना राउंड स्टार्ट कर सकते हैं. सो आई विल ऐड द यार्न फर्स्ट. आई हैव मेड अ स्लिप नॉट एंड आई विल ऐड द यार्न एंड आई विल चेन 1 टू सिक्योर. मैंने चेन 1 कर लिया. नाउ चेन 3, 1 2 3, and like we used to make all the corners till now when we were making the granny square, similarly we have to make this corner. तो इसी तरीके से हम अपना corner बनाएंगे जैसे हम बाकी corners बनाते थे. So first we'll make 2 double crochet stitches because the chain 3 will be counted as our first double crochet stitch. Chain 2, 3 more double crochet stitches in the same space. तो उसी same space में 3 और double crochet stitches बनाएंगे. 1 2 and 3. Now chain 1, and now we have to work in these spaces, in these chain 1 spaces until we reach our next corner. So here we have to just keep making 3 double crochet stitches in each of the chain 1 spaces. तो हर chain 1 space में हम 3 डबल क्रोशा स्टिचेस का क्लस्टर्स बनाएंगे. सो 3 डबल क्रोशा स्टिचेस इन द नेक्स्ट chain 1 space, 2 and 3,
then chain 1, and don't forget to put the chain 1 in the middle of each cluster. तो हर cluster के बाद एक chain 1 करना ज़रूरी है. 2, 3, then again chain 1, then 3 double crochet stitches in the next chain 1 space, 2, 3, chain 1, and this is how you have to do until you reach here. I'll finish till here and then I'll show you what to do from here. So I've almost reached the bottom part here, the corner part here. So first we will do 3 double crochet stitches in this corner. तो इस corner में हम पहले 3 double crochet stitches करेंगे. Then chain 1 and we'll shift to the next corner, corner of the next square, and make 3 double crochet stitches here. 1, 2 and 3. Then chain 1 and continue doing 3 double crochet stitches onto every chain 1 space. हर chain 1 space में 3 double crochet stitches करेंगे. सिर्फ यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने इस जो यहाँ पे कॉर्नर है इसमें 3 डबल क्रोशे स्टिचेस किए हैं. यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनाना हमने, सिर्फ 3 डबल क्रोशे स्टिचेस करने हैं. जो ये वाले कॉर्नर्स हैं जो नीचे के हिस्से में आएंगे, जो ओपन है, जो जॉइन नहीं है किसी स्क्वायर के साथ, सिर्फ वहाँ पे हमने अपना कॉर्नर बनाना है 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, चेन 2, 3 डबल क्रोशे स्टिचेस का. सो हियर द squares, those are attached, we need to make just 3 double crochet stitches in the space, and the portion where it is open, not attached to any other square, there we have to make the corner by 3 double crochet stitches, chain 2, 3 double crochet stitches. Now we'll just keep doing 3 double crochet stitches in each of these chain 1 spaces. 1, 2, 3, chain 1, 3 double crochet stitches in the next chain 1 space, 1, 2, 3, chain 1, and we have to continue this until we reach our corner. तो इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे जब तक हम कॉर्नर पे नहीं पहुंचते. So here you can see I have reached this portion from where 2 sets of 3 double crochet stitches are coming out. So the chain 2 space we'll work as a corner, 3 double crochet stitches. तो इस chain 2 space में हम corner की तरह work करेंगे 3 double crochet stitches, chain 2 and 3 double crochet stitches. तो हर round में जो chain 2 space होगा उसमें हम corner की तरह work करेंगे और सारी chain 1 spaces में हम सिर्फ 3 double crochet stitches करेंगे. So every time in the chain 2 space you have to make the corner, and in the chain 1 space you have to crochet only 3 double crochet stitches. So now chain 1 and work normal as we were working. So 3 double crochet stitches in each of the chain 1 spaces here. इसी तरीके से हम वर्क करेंगे, 3 डबल क्रोशा स्टिचेस करेंगे हर एक चेन 1 स्पेस में, चेन 1, फिर से 3 डबल क्रोशा स्टिचेस. तो देखिए मैंने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया. फिर से मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ जहाँ पे 2 स्क्वायर्स जॉइन हो रहे हैं यहाँ पे. सो आई हैव रीच्ड वेयर दीज 2 स्क्वायर्स आर connected together. So I'll be doing one set of 3 double crochet stitches here and one set of 3 double crochet stitches here. तो इस वाले पोर्शन में 3 डबल क्रोशा स्टिचेस करेंगे, 1, 2, 3, चेन 1, एंड इस वाले में ये वाले स्क्वायर को छोड़ देंगे, यहाँ कुछ नहीं करना. We don't have to work anything in this square. We like straight away go into the next square and work 3 double crochet stitches. Sorry. Chain 1, one double crochet stitch, 2 and 3. Then chain 1 and continue as we were doing
one set of 3 double crochet stitches in each of these chain 1 spaces, and 3 double crochet stitches, chain 2, 3 double crochet stitches in the chain 2 space. So इसी तरीके से हमने पूरा राउंड कंप्लीट करना है. And once you reach the starting of the round, you have to slip stitch. I'll show you how to do that. So just complete the round as usual by doing 3 double crochet stitches in each of the chain 1 spaces. हर chain 1 space में 3 डबल क्रोशा स्टिचेस करने हैं. फिर ये चेन 2 स्पेस में जब हम आएंगे, पहुंचेंगे यहाँ तक, तो 3 डबल क्रोशा स्टिचेस, चेन 2, 3 डबल क्रोशा स्टिचेस करने हैं. फिर से यहाँ पे चेन 1 स्पेसेस में 3 डबल क्रोशा स्टिचेस करने हैं. फिर यहाँ पे जब नीचे की तरफ पहुँचेंगे तो 3 डबल क्रोशा स्टिचेस यहाँ इस वाले गैप में, एंड 3 डबल क्रोशा स्टिचेस ये वाले गैप में. ये वाले स्क्वायर में कुछ भी वर्क नहीं करना. देन अगेन यहाँ पे वर्क करेंगे 3 डबल क्रोशा स्टिचेस चेन 1 स्पेस में. फिर यहाँ पे कॉर्नर आ जाएगा, फिर से 3 डबल क्रोशा स्टिचेस. इसी तरीके से पूरा राउंड को हम कंप्लीट करेंगे. सो आई विल कंप्लीट द राउंड एंड देन आई विल शो यू हाउ टू जॉइन. फाइबर मत भूल जाना, वो रखे हमारे डाइजेशन का ख्याल. She's kisses. Say it with a kiss. Ready for a taste of Lotus Pro and Liquid Man? It's high intensity, high definition, weightless. तो देखिए ये मैंने उतना लॉन्ग बना लिया है जितना मुझे चाहिए था. आई हैव मेड इट एज लॉन्ग एज आई वांट. एंड नाउ फर्स्ट आई वांटेड टू ऐड द चेन स्ट्रैप्स, बट नाउ आई एम गोइंग टू ऐड रिबन. पहले मैंने सोचा था चेन्स बना के वो ऐड करने के लिए, लेकिन अब मैं इस पर रिबन्स ऐड करूँगी. ये देखिए, आप कोई भी कलर का रिबन ले सकते हो. यू कैन टेक एनी कलर विच वे यू लाइक. दिस गोइंग टू टेक I'll measure and I'll take 2 strips of the same measurement of the ribbon. तो सेम मेजरमेंट की 2 स्ट्रिप्स हम लेंगे जो हम स्लीव्स के लिए, ऊपर स्ट्रैप्स के लिए यूज़ करेंगे, और एक मैं लूँगी जो मैं वेस्ट के अराउंड टाई करूँगी. सो 2 आई एम गोइंग टू टेक and make the shoulder strap here. So I'm going to put it in one of the chain 2 spaces here and chain 2 spaces of the back side. And I'm just going to tighten it here, and same at the back. आप किसी भी तरीके से इसे लगा सकते हैं, बो बना के, या जैसे जैसे आपका दिल करे आप वैसे इसे ऐड कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट इट्स टाइट इनफ एंड इट डजंट ओपन. सो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये टाइट हो और ये खुले नहीं. तो ये एक हमारा स्ट्रैप बन के रेडी हो गया. इसी तरीके से हम दूसरा स्ट्रैप भी बनाएंगे. द सेम वे वील add the strap on the other side as well. तो आप ये किसी भी साइज़ का बना सकते हो. बस आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप बड़ा साइज़ बना रहे हो तो स्क्वायर्स आपके बड़े साइज़ के होंगे, और छोटे साइज़ का बना रहे हो तो स्क्वायर्स आपके छोटे साइज़ के होंगे. सो आई जस्ट मेजर so that both the straps are of the same measurement, and then just tie a knot here and at the back side. That's it. And now I'll be adding it in the center. So I'll put the strap in all the gaps over here. I'll go in one gap and come out of the other like this. तो मैं एक स्ट्रैप के अंदर, एक गैप के अंदर जा रही हूँ और दूसरे गैप से बाहर आ रही हूँ. तो यही मैं पूरे टॉप के अराउंड ऐसे इसे ले जाके दूसरी तरफ से ले आऊँगी. You can even use a bobby pin to do this.
it will be more easy. So using a bobby pin, we are just going in from one gap to the other. It's better you go in from the front side. Okay, so we're going in from one side, coming out of the other, then going in from one, coming out of the other. It's better if you use a safety pin, it will be even more easier. तो आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, उससे भी आराम से हो जाएगा. सो वी आर जस्ट गोइंग इन एंड we'll just go in from all the sides and come out of the other. तो इस साइड से जाके हम दूसरी साइड से बाहर आ जाएंगे. So I've almost completed. I started from here and then I completed the back side, and then on the other side make sure that it's in the straight line. अब ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल straight line में आपने ये किया है. And you can even put on the top and then you can adjust and see where you want your belt to be, and then you can add your belt at the portion you want. I haven't weaved in the ends yet, so I'll do that later. तो मैंने weave in नहीं किए हैं ends, ये मैं बाद में करूँगी. So now see, this is the line. Okay. So here that's it. I'm just going to pull it out from here, from the center. That's it. So here now I'll pull the belt a bit so that it gets its proper shape, as I want it to be tighter at the center. And you can cut the ribbon according to the size you want, and we can just tie it around here. And your top is ready. I hope you liked it. You can make it even more longer if you feel like. आप टोटली आपके ऊपर है, आप इसे लॉन्ग भी बना सकते हैं, बट मैंने ये इसी तरीके से बनाया है. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप क्रोशेइंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी. बाय बाय.